ते गोपेशकपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यभक्त्यै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधवत्यै दीप्ताश्च प्रामाणिकानां नमस्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्मिं वदामि राधां करुणावरात्रां ततो मम नास्ति गतिर्नताम्। हा देवी काकुवरगदगदयद्वाचां याचने पत्रभुवि वन्दभद्रभुजात् अस्य प्रसादमुदशजनात् कृत्वा अंगस्यामंसपामंदिकिदंडीवरं जट्टं जाजुगुरोचिषं पट्टंबरस्य श्रिया वृन्दावनवासमिदसद्धामदिदामोदरं राधासुन्दरविसृज्जलभुजां ध्यायं दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति गायते राधे तन्नयामि चरणान्तिके। वंशैर्विभूषितकरान्नवनीरदाभा दीप्ताम्बरात् अरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमदत्तं किमोऽहं न जामि। कृष्णात् परमदत्तं किमपि अहं न जामि। रूपमञ्जलिकरार्चितपादपद्मभुजङ्गभुजार्पितमस्तकाय आमुदकनकगौरीपदारविन्दं सन्वयामि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कभी उठा दिया हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
गा रहे कि नहीं? हाँ? पांचे पीछे सुनाई पड़ रहे हैं? हाथ उठाइए, सुनाई पड़ता, हाथ उठाइए। सबसे पहले मेरे गुरुपाद Avant tout, je souhaite offrir mes hommages les plus respectueux à Nitya Lila Pravishta Vishnupada Ashtotara Shishimad Bhaktivedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, à qui j'offre mes hommages les plus respectueux. It's not working, ouais. J'offre mes hommages les plus respectueux à tous mes maîtres spirituels. J'offre ainsi mes hommages les plus respectueux à Ashtotara Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Padmanabha Maharaj, एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, It's not working, I don't know. एवं इस सोसाइटी के जितने सदस्यगण सभी के मैं यथायथ अभिवादन करता हूँ। I don't know why it's not working. बहुत दिनों के बाद 95? हमारी मदन गोपाल प्रभु, Donc, Srila Maharaj remercie tous ceux qui l'ont invité. मुझे निमंत्रण दिया आज इस सभा में कुछ हरि कथा कीर्तन करने के लिए। बहुत सुंदर रूप में उन्होंने व्यवस्था दी। Donc, il offre ses remerciements à tous ceux अभी अभी हमारे शिला महाराज qui l'ont invité ici. Et il y a aussi Padmanabha Maharaj ici. आजीविका के सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत सुंदर रूप में अपने वक्तव्य को जो है रखा गया। Donc j'attends pour la traduction, l'appareillage de fonctionner parce que ça ne fonctionne pas. ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की प्रणम्य व अभिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण के हम जन्मतिथि मना रहे हैं। Aujourd'hui, nous avons entendu les gloires en l'honneur de l'apparition de Shri Krishna, que l'on va célébrer très bientôt. Donc, Padmanabha Maharaj a très joliment décrit les gloires de Krishna et il a invité tous à se rendre au temple de Janakpuri pour célébrer le jour de l'apparition de Krishna, l'anniversaire de Krishna, à Raman Bihari Gaudiya Math à Janakpuri. Vous devez tous vous rendre à ce temple pour célébrer la naissance de Krishna, l'apparition de Krishna. Dans ce monde matériel, tout le monde célèbre l'anniversaire de leurs enfants. Ils dépensent tellement d'argent pour cette célébration. Même pour célébrer l'anniversaire de leur mariage, ils dépensent tellement d'argent. Vous savez tous cela. Tellement d'argent est dépensé pour célébrer ces différents événements. Mais le contrôleur suprême pour le service de Krishna, si on sert Krishna avec cette même humeur, avec tout l'amour et l'affection et tout l'argent que l'on dépense pour les membres de notre famille, alors notre vie sera couronnée de succès, parce qu'un jour, la vie qui anime ce corps, la vie dans ce corps va s'arrêter. On allume des bougies sur le gâteau d'anniversaire et on souffle ces bougies.
Mais dans la tradition védique, dans les temps anciens, le jour de la naissance de Krishna, comment est-ce que Mère Yashoda a célébré la naissance de Krishna? Elle a invité de nombreux brahmanas. Vous devez savoir cela. Quelle est la manière appropriée de célébrer l'anniversaire dans la tradition védique? Mais on se rend compte que on commence à oublier notre tradition védique et on se met à célébrer l'anniversaire à la manière des pays de l'Occident. Donc, à cause de l'influence de la culture de l'Occident et en raison du fait que les gens en Inde ne suivent plus, n'observent plus la culture védique. Dans la Bhagavad Gita, dans le Ramayana, dans le Mahabharata, on doit offrir l'adoration à Dieu, la personne suprême. Il était une fois la déesse Parvati à Kailash. Elle était assise avec son époux, le Seigneur Shiva. Et elle a dit, hé, Patidev, très humblement, est-ce que je peux te poser une question, mon cher époux? Si on veut poser une question à quelqu'un, il y a une manière, une étiquette selon laquelle on pose une question. Dans la Gita, il est dit, dans ce verset, donc, de quelle manière on pose des questions en offrant des hommages respectueux, en offrant des pranams, pari prashna. On doit poser des questions ainsi avec humilité, avec une attitude de service. Seulement alors, on aura adopté l'attitude appropriée pour recevoir des réponses à nos questions. Et donc, cette personne qui sera complètement investie pour répondre à ces questions essentielles de l'existence, lorsqu'il va noter votre attitude de service, votre humilité, il sera enclin à répondre à vos questions. Donc, Parvati Devi, avec une humeur très humble, elle s'est adressée à son époux parce qu'elle est très dévouée à son époux, donc d'une manière très humble, elle a demandé à son époux, hé Patidev, s'il te plaît, donne-moi, accorde-moi ta miséricorde et dis-moi qui est Dieu, la personne suprême, qui devrait être l'objet de notre adoration. Parce qu'on observe l'adoration de nombreux devas, mais en réalité, qui devrait-on adorer? Donc Shivji, le Seigneur Shiva a dit à Parvati, écoute, c'est un sujet très confidentiel. Dis-moi, à qui devrait-on offrir l'adoration? À Dieu lui-même, à Krishna. C'est lui qui est digne de l'objet de notre adoration. Il n'a pas dit offre-moi l'adoration. Mais il a répondu à son épouse, à Parvati, en lui disant, il faut offrir l'adoration à Vishnu, à Krishna. Qui est le suprême? Qui est Dieu? C'est Bhagavan, Shri Vishnu, au Krishna. Dans la Bhagavad Gita, il est dit,
कहने लगे अर्जुन सुनो मुझसे कोई Bhagavan श्रेष्ठ Krishna वस्तु dit à Arjuna, मत्तं परतरन्नात् il n'y a rien qui m'est supérieur. Il n'y a rien de plus élevé que moi. Il n'y a personne de plus élevé que moi. Donc qui devrait-on adorer? On devrait adorer Dieu la personne जब तक हम suprême chez भगवान की Vishnu. पूजा नहीं करें Si on n'offre pas l'adoration à Dieu la personne suprême, संपूर्ण नहीं इसलिए पूजा किसे किया जाए d'offrir l'adoration au Deva ne portera pas les fruits désirés. Donc, c'est très important de comprendre que l'objet de notre adoration devrait être Shri Vishnu, Krishna. कार्यवाही Les Devas, en fait, sont les serviteurs de Shri Vishnu, de Dieu la personne सेवक सेविका suprême. कार्य करने के लिए स्वयं भगवान Ils ont के différents आदेश से postes, en इस fait, सूर्य को différentes सब responsabilités, उदय होता है और responsabilités, पश्चिम pardon. दिशा में सूर्य अस्त होता Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. है वही परात्पर तत्व संग भगवान Toutes les planètes, en fait, sont en mouvement sous l'impulsion de Dieu la ये personne विश्व suprême. ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं Tout ce qu'on peut voir dans ce monde matériel, इसलिए भगवान कहते हैं toutes les मया activités, दक्षिणा प्रकृति tous les mouvements sont inspirés par Dieu la personne हेतु suprême. आनेन पंथ्य जगत भी परिवर्तते कोई कहते हैं कोई करने वाला नहीं Certains है, disent, सब अपने आप होते जा रहे हैं Tout se déroule automatiquement sous l'effet de la nature. Tout est automatique. Rien n'est automatique. En réalité, il y a toujours un agent derrière ce que l'on voit, ce que l'on perçoit comme étant quelque chose d'automatique. साइंस एडवांस साइंस इसलिए वो रखा है Avec l'esprit influencé par la science matérielle, on a tendance à penser ainsi. और वही जो On pense que avec tous les objets électroniques que l'on manipule de nos jours, बोलेगा तो ये विश्व ब्रह्मांड के ब्रह्मांड De la même manière, कौन परिचालना कर रहे हैं tous ces univers matériels sont activés à travers l'énergie de Krishna, qui est le contrôleur उसके लिए एक suprême. मैनेजर भी जरूरत होता है डायरेक्टर भी जरूरत होता है Pour faire fonctionner une entreprise, il faut un manager, il faut un directeur, même pour une petite entreprise. Et on peut penser que ce monde, qui est d'une complexité phénoménale, यहाँ दक्षिणा प्रकृति n'est pas contrôlé par une intelligence supérieure. हेतु उन्होंने कौन किया जगत भी परिवर्तित ये जगत में जो कुछ भी देखते जा रहे हैं Tout ce que l'on peut voir dans ce monde matériel, qui est le suprême contrôleur de tout cela, c'est इसलिए हम Krishna. कहते हैं, सबके मालिक एक है कौन है Il y a un seul contrôleur, une seule personne suprême, et cette personne suprême, ce suprême contrôleur, c'est Krishna lui-même. कृष्ण के हाथ में Voilà Tattva, la vérité absolue qui est non différente de Krishna. Cette vérité absolue prend une forme, cette forme originale de Krishna. Et il a accompli un divertissement qui est complètement extraordinaire et tellement merveilleux. जिसके देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते समझ नहीं पाते चार मस्तक वाले Donc même en voyant le Seigneur Brahma, on devient complètement subjugué. Combien de têtes avons-nous? Combien de mental? On a juste un mental. Et quelquefois on dit mon mental ne fonctionne pas. और ब्रह्मा जी के कितने सिर है Et Brahmaji, il a 4 têtes. चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म Chaturmukh शिव जी के Brahma. कितना है Et Shivji, il a 5 têtes. केवल इसी ब्रह्मांड की इससे अपेक्षा नाज़िल Dans ce Brahmanda, dans cet univers, जिसके डायमीटर il y a un nombre illimité d'univers. Donc il y a des brahmas avec un nombre de têtes de plus en plus important en fonction du diamètre de la Terre ou de l'univers. Il y a un brahma avec un certain nombre de têtes. Cet univers est le plus petit dans la création matérielle. Le créateur de cet univers, Brahmaji, il possède 4 têtes.
Et Brahmaji, quelquefois, même avec ses 4 têtes, il oublie certaines choses. Et il a un problème avec son faux ego. Il pense qu'il est le suprême. Une fois, lorsque Brahmaji विचार करने लगे a कि मैं pensé, नहीं काम करूं तो कोई नहीं, हमारे पद कोई नहीं लेगा, हमारे पद कौन ले, तो ये सबसे qui va prendre ma position? बड़ा पद है और सब प्रकार के दायित्व हमारी है, हम करने वाले हैं। C'est la position la plus élevée, a-t-il pensé. C'est moi. Resign letter दे Il a écrit une lettre de résignation à Dieu, la personne suprême. क्योंकि Il a dit, je veux quitter mon emploi aujourd'hui. Et Brahmaji a pensé, और कौन चलाएगा कौन करेगा, इसलिए प्रभु जरूर हमें जो है बुलाएंगे, हैं? मनाएंगे हमें। donc il voulait recevoir les honneurs qu'il pensait être dignes dans son rang. Donc il a envoyé une lettre de résignation Resign letter à Dieu, la personne suprême. किसके पास, भगवान के À Bhagavan, il a envoyé cette lettre de résignation. भगवान ने क्या कि उस रिजाइन लेटर को लेकर के रखा, Et qu'a fait Dieu? आपने दूसरे दिन प्रातः काल में Le jour suivant, le matin de bonheur, दरवाजा खोले, Brahmaji, lorsqu'il a ouvert sa porte, बड़ा एक विशाल एक procession, il a vu qu'il y avait toute une procession. ठीक बिल्कुल उनकी दरवाजा की Il y avait une foule de gens, आधा मील दूर, à peu près un demi-kilomètre. Il y avait des milliers de personnes qui se dirigeaient dans cette direction particulière. और इतने Où se rendent-ils तेज गति tous? से सब लोग चलते जा रहे हैं विशाल procession में। ब्रह्मा जी Tout le monde court très rapidement pour atteindre quel endroit. कहाँ जा रहे हो? Où allez-vous? A demandé Brahmaji à toutes ces personnes. Personne ne lui a répondu parce qu'ils n'avaient pas le temps de répondre. Ils étaient tellement affairés à se rendre à cet endroit particulier qu'ils n'avaient pas le temps de répondre à sa question. पकड़ लिया, अरे बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? Donc il a attrapé la dernière personne qu'il a pu saisir et lui a dit, où allez-vous? Il a dit, भगवान ने आज एक पद के लिए il y a un poste qui est vacant. C'est le poste de Brahma. वैकेंसी के लिए आता है, पद खाली है, इतने Donc il y a une offre d'emploi pour le poste de Brahma. 10,000 पर 1,00,000 व्यक्ति अप्लाई करते हैं। Donc comme de nos jours, quand des milliers de personnes posent leur candidature pour un emploi, donc il y avait eu donc une offre d'emploi pour le poste de Brahma. बोले देखो ब्रह्मा जी ने रिजाइन लेटर दे दिया, वो काम नहीं करेंगे। Et ils ont dit, Brahma a donné sa démission à Dieu, la personne suprême, donc ce poste est vacant. Donc on va se rendre à cette interview pour pouvoir obtenir ce poste. On n'a pas le temps de te parler parce qu'on se rend près de Bhagavan pour obtenir ce poste. एक पद के लिए इतने लोग Donc il a dit, oh, mais c'est moi qui ai écrit cette lettre de démission, c'est moi, Brahma. Il a dit, personne ne peut me remplacer. जल्दी ही Donc Brahmaji, très rapidement, il s'est rendu auprès de Bhagavan, auprès de Dieu. Il a dit, hé Prabhu, रिजाइन लेटर वापिस rends-moi ma lettre de démission. देखो वास्तव में सत्य है, ए बालक sit down। इस संसार में हम नहीं देखते कि आप परिवारजन में हो, कुछ भी तो है, हम कहते हैं ना, हम On नहीं voit dans रहते, ce कौन monde करेगा? matériel. देख लेता। Vous pensez, si je ne suis pas là, qui va prendre soin de ma famille? ब्रह्मा जी केवल C'est Dieu qui inspire le cœur de tous et de chacun. जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, Brahma avait ce faux मैं ego. नहीं करूं तो कौन काम करेगा? किंतु ब्रह्मा जी के करने की Il a pensé, si je n'accomplis pas cette tâche, qui va accomplir cette fonction? वही स्वयं भगवान Mais qui donne le pouvoir à Brahma d'accomplir toute chose? C'est Dieu, la personne suprême, qui lui donne ce pouvoir. है। Tout est mis en action à travers l'énergie de Krishna. इस तत्व को जैसे दिखाया, प्रभु शक्ति Ce से tattva a été établi. Dieu a donné अरे वो बात छोड़ दीजिए, मैं सत्य बताता हूँ। देखो एक गिलास
he has, क्लास को आए बुला huh? सकता हूँ मैं? ये प्रभु मेरा ये हाथ में शक्ति न दे। He's saying he has tissue. When I थोड़ी give सी something शक्ति to my हाथ से husband, ले he ले। never gives to me. एक ग्लास If you give him, maybe he will do. हैं? लोगों के ये मर जाता है क्या बोलते हैं? पैरालाइज बिल्कुल। देखो वो तो जब जुबा रहते हैं सब He कहते हैं, मैं doesn't. कर रहा हूँ। चीन में जाते हैं ना ऐसे ऐसे You see, I'm not lying. हाँ? They can see the proof when I am asking you, don't do. कहाँ चले 120-25 मुर्गा खाने वाले इतने बड़ा शरीर हैं? कौन था? तारा सिंह है ना? Excusez-moi pour... मान के जो है j'ai perdu un peu le fil de l'histoire, comme quelqu'un m'a demandé de faire un service. तो अंत में क्या है? वो शक्ति कहाँ चला जाता है और वो शक्ति कहाँ से आता है? ये जब हम अनुभव कर लेते हैं तब जीवन Lorsqu'on le réalise que le pouvoir vient de Dieu, la personne suprême, Dieu a donné tous les pouvoirs aux différents agents qu'il a engagés à prendre soin de la création et de remplir différentes fonctions. और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान कोई वस्तु भेद नहीं Shrimati Radhika possède tous les pouvoirs et Krishna, मान देते हैं il est celui qui est à l'origine de ce pouvoir. Shakti Shaktiman. Donc le pouvoir et celui qui possède ou celle qui possède ce pouvoir ne sont pas différents l'un de l'autre. प्रभु के कृपा से सब कुछ होता है C'est par la miséricorde de Dieu, la personne suprême, que tout se déroule, que tout prend place. कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है इसलिए गीता में संग भगवान Quelquefois, on développe ce faux ego. अहंकारो विव्रमात्मा कर्तारो विमन्नते जीव अपने के इतने अहंकार करते नहीं करने वाला Les jivas sont complètement absorbés dans cet ego. Ils pensent qu'ils accomplissent des choses. Mais. है बकरा क्या करता है Ce sont les moutons qui produisent ce son. अरे नहीं मैं करने वाला नहीं Il a dit, je ne suis pas l'auteur de mes actes. C'est Dieu, en fait, qui donne le pouvoir d'accomplir toutes choses. प्रभु से ही सब कुछ प्रकट Tout होता se है produit à travers la miséricorde du Seigneur suprême. और अंत में प्रभु की इच्छा से सब कुछ नष्ट हो जाता है Tous peuvent survivre प्रलय à travers les pouvoirs du Seigneur ये क्या suprême. होता है उनकी इच्छा से Et lorsque la destruction prend place, c'est aussi à travers les pouvoirs illimités de Dieu, la personne suprême. और उनकी इच्छा से ही सब नष्ट ध्वंस हो Par les désirs du Seigneur, on a pris इसलिए जो समझ लेते हैं cette vie, notre vie a pris une forme. Et par les désirs du Seigneur, cette vie s'arrête également. अहंकार और विमुरात्मा C'est pour cette raison qu'il est dit dans la Bhagavad Gita, ऐसे प्राप्त कर प्रतत्व संग भगवान Dieu, la personne suprême, est ainsi. Dans les Upanishads, il est dit, कोई ब्रह्म के बारे में आप पूछिए सुनिए इस संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही c'est important de s'enquérir au sujet de Dieu, la personne suprême, à travers qui toutes choses sont manifestées, और उनके प्रभु की toutes इच्छा से choses ही sont animées, सब et par son désir, tout également va être détruit au moment इसी opportun. की जब हम समझ लेते हैं Lorsqu'on réalise cette vérité absolue, on n'aura plus aucun doute. वही प्रभु कितने लीला आदि करते हैं सृष्टि की लीला करते हैं वही प्रभु Il a accompli le divertissement de la création प्राकृत शिशु के भांति बालक के भांति et il s'est manifesté dans ce monde en prenant naissance du ventre de sa mère comme un être humain ordinaire de ce monde. क्या हम कौन सा मनाते जा रहे हैं Combien est extraordinaire ce divertissement de Dieu, la personne suprême, qui a pris naissance du ventre de sa mère. C'est un festival extraordinaire, une célébration merveilleuse. इसको देख करके भ्रमित हो जाता है Après avoir vu cela, après avoir été le témoin de cela, ou en entendant ce divertissement, on peut être confus quant à la nature de Dieu, la personne suprême. Mais on doit méditer sur Dieu, la personne suprême. आज 31
Uniquement par cette miséricorde, on est tous rassemblés ici. बिछोड़ जाते Et par ces désirs, on sera également séparés à la fin. हैं। हम क्या चाहिए हम ही प्रभु के Quel est notre pouvoir, quelle est notre indépendance dans tout cela? मामूली वंश जीवो लोके On est une partie infime de Dieu, la personne suprême. गीता में भगवान कहते हैं Cela est décrit dans la ये जीव क्या Bhagavad है? अरे Gita. वंश विभिन्न अंश ग्रुप में Tous les jivas sont font partie de Krishna, sont des parcelles infinies de Krishna. हम सनातन अंश है जीव अंश अविनाशी Les jivas sont éternels. Pourquoi? और ब्रह्म Bien भगवान qu'ils soient infinitésimales, ils font partie de la nature de Krishna, dont la nature est illimitée, est éternelle. भयति इति ब्रह्म जो विशाल वस्तु है ब्रह्म Donc Brahma a une forme gigantesque. जिसके उपनिषद में कहता है शास्त्र में कहते हैं ब्रह्म Dieu lui-même dans कोई les कहते हैं Upanishads dit परमात्मा और कोई कहते हैं Brahma, Paramatma et Bhagavan. वदन्त तविदस्ततं जज धनमात्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्तते कोई एक ही वस्तु तीन रूप में हमारे निकट प्रतीत होता है दिखाई पड़ता है Dieu, la personne suprême, peut être perçu sous ब्रह्मवादी ces के trois निकट formes. ब्रह्म के रूप में जधीर्मयो ब्रह्म Il a manifesté cette forme de Brahma, qui est Jyotir Maya, qui est l'effulgence du Seigneur suprême, la lumière divine. और जोगी के निकट Ensuite, les yogis, ceux qui observent le processus du yoga, essayent de réaliser Dieu la personne suprême sous la forme de son Paramatma. सरश्चर्य Et Shama Sundar, avec sa forme à deux bras, qui tient la flûte entre ses mains, तीन et cette व्यक्ति forme के de निकट तीन रूप Bhagavan. में दिखाई पड़ता Donc, il se manifeste sous des formes différentes en fonction de la compréhension de la conscience de ses है। dévots इतने तेज ou de la nature qui les lie à Dieu, à Dieu la personne 400 suprême. वोल्ट बत्ती हो उसकी Donc, इतना तेज है उसका l'analogie est donnée avec le pouvoir de l'électricité. Lorsque l'électricité est puissante, on peut manifester une lumière très forte. ज्योति के रूप में De la même manière, qu'on peut être aveuglé par la lumière. जो तेज जिसे कहा जाता है शास्त्र में L'effulgence de Dieu la personne suprême est tellement importante इतने तेज que l'on peut être ébloui par cette effulgence. और जोगी लोग और थोड़ी नजदीक में आ जाते हैं Les yogis परमात्मा के रूप में वो दर्शन करते हैं और qui भक्त लोग s'approchent un peu plus près peuvent voir la forme du Paramatma. जितने निकट में आओ Alors que les impersonnalistes ne voient que l'effulgence d'une Seigneur suprême. जितने दूर बैठे Plus on s'approche de Dieu, tout comme lorsqu'on est assis très loin, on ne peut pas bien entendre ce qui est dit. क्या क्या Les êtres conditionnés ont 4 défauts. हाँ? Brahm, Pramam, Vipalepsa. हम Brahm, प्रमाण Praman, कर्णपटक और Karnapatak et Viparipsa. भगवान में ये चार Mais Bhagavan n'est pas soumis à l'influence de ces 4 défauts. और हम लोग कभी-कभी मदमस्त On हो voit जाते une हैं, chose, प्रमत्त हो जाते हैं। et ce que notre vision est souvent influencée par l'illusion. On a la tendance à critiquer les autres. कर्णपटक की तात्पर्य है Karnapatak, हमारे la जितने भी signification इंद्रियां est जो है tous nos sens ठीक काम नहीं करता sont limités, जितने sont ऊपर होते imparfaits, जाएगा, nos sens sont उम्र बढ़ते imparfaits. जाएगा, एज होते जाएगा आपके सारे इंद्रियां धीरे-धीरे La capacité de nos sens décroît au fur et à mesure qu'on avance en âge. इस शरीर के धर्म On voit moins bien, on entend moins bien, etc. C'est la nature de ce monde. Le pouvoir de la vision décroît progressivement. शरीर क्षीण हो जाएगा बुढ़ापा आ जाएगा जितने ही हम प्रयास करें अपने Le corps devient faible. क्योंकि कहाँ छुपा पड़ा छुपाओगे On peut accomplir de nombreuses choses.
lorsqu'on devient plus âgé, quand on vieillit, on commence à atteindre nos cheveux. Après quelques jours, on voit à nouveau les cheveux blancs. La moitié une partie des cheveux est noire et puis il y a les racines grises qui se manifestent à nouveau après quelques jours. Donc on peut voir sur la tête des personnes qui teignent leurs cheveux que les cheveux se remettent à pousser de la couleur relative à notre vieillesse. On ne peut rien cacher. Tous nos sens progressivement vont décroître. On va se mettre à perdre nos dents les unes après les autres. Et notre vision va diminuer. Et progressivement, nos joues qui étaient bien rondes quand on était jeune s'enfoncent et puis toutes les rides se développent sur le visage. On va perdre le pouvoir de l'ouïe également. Ça, c'est la réalité de ce monde matériel. Quoi que l'on fasse, on ne peut pas cacher, on ne peut pas se cacher. On peut essayer, mais lorsqu'on vieillit, notre main se met à trembler. On va progressivement avoir besoin d'un bâton pour marcher. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas cacher votre vieillesse. Dans le Srimad Bhagavatam, il y a l'histoire de Gajendra, l'histoire de l'éléphant et du crocodile. La femelle de l'éléphant avec les enfants, ils se baignaient dans un lac. Et alors qu'ils jouaient dans ce lac, un crocodile s'est avancé et il s'est mis à mordre la patte de l'éléphant pour l'attirer dans la rivière et pour pouvoir le tuer, le manger. L'éléphant qui est un corps tellement gigantesque, il a essayé de résister, mais il ne pouvait pas se libérer des mâchoires acérées du crocodile. Son épouse, les enfants ont essayé de le sauver, mais tous ses efforts étaient vains. Le crocodile avait ses mâchoires acérées autour de la patte de l'éléphant. Donc, tout son sang s'écoulait à travers sa blessure. Et ainsi, et il était sur le point de mourir. Il était sur le point de quitter son corps. Cet éléphant. Cette bataille a duré pendant des milliers d'années. Un éléphant est fort sur la terre ferme, mais l'élément du crocodile, c'est l'eau. C'est la raison pour laquelle le crocodile était à son avantage, parce qu'il suçait le sang de l'éléphant. Il était dans l'eau, et donc progressivement, l'éléphant est devenu très faible. Au moment de quitter son corps, il a pensé à Ti, qui veut dire j'avais une existence dans ce monde, j'avais tellement de pouvoir, mais aujourd'hui, j'ai tout perdu. La vie humaine est ainsi. Si un tout petit peu de pouvoir vient à nous, on pense tout d'un coup qu'on est l'auteur de nos actes et on développe un tel faux ego.
personne obtient un certain pouvoir, on a un tel faux ego qui se développe, वंश की कुल की que ce मर्यादा soit de l'argent, des richesses, और une उससे मनमत्त position, हो जाता है। ou développer ce faux ego d'être une personne très importante, une personne très renommée, une personne très riche. इसलिए प्रभु की कृपा जब तक नहीं हो समझ नहीं पाएंगे। नायनात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन अनुसंदेयमासितम भजते तादृशक्रीडा जासुत्वा। Ce verset qui décrit que Dieu, la personne suprême, Swayam Bhagavan, accomplit ce divertissement dans ce monde. Il descend de Golok Vrindavan. Il manifeste des divertissements extraordinaires. En fait, il ne prend pas naissance, il ne meurt pas, mais il a accompli ce divertissement dans ce monde. जो मेरा जन्म कर्म के बारे में कोई जान लेते हैं और उसके पुनः इस संसार में ceux qui peuvent réaliser que les activités de Krishna, de Dieu la personne suprême, sont complètement transcendantales. Cette personne n'aura pas à revenir dans ce monde matériel. Afin de nous accorder sa miséricorde, Dieu la personne suprême s'est manifesté dans ce monde, a pris naissance du ventre de sa mère, afin que les êtres vivants de ce monde soient attirés à lui et afin qu'ils puissent être libérés de ce monde. Ce kirtan qui décrit comment Gopal Krishna a pris naissance dans la maison de Nanda Maharaj. हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन ऋषिकम कुटमणि जय गोपी जन बोल जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी गा।